Hello and welcome. I am Vishwajit Gautam and you are seeing CBSE and CISE class videos 360 channel. Today we are solving the numericals of exercise 1B of real number chapters of class 9th math. Okay. So, without actual division, find which of the following rationals are terminating decimals. ये हमें बताना है. And 8 by 35 this is given and this is the terminating or not without actual division we find. So denominator of this denominator is 35 and 35 can be written sin 5s are 35 and 35 has a prime factor 7 prime factor of 7 which is other than 2 and 5 2 and 5 से other than है so और तो जैसा कि हमने पढ़ा था इससे बिफोर के वीडियोस में कि 2 एंड 5 से यदि अदर प्राइम फैक्टर मिलता है हमें डिनोमिनेटर में देन वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो सकता सो 8/35 is not a terminating decimal. Now we find 16/25 is the terminating decimal or not. So let's solve 16/25. Then इस टाइप जब हमें टर्मिनेटिंग बताना होता है देन उस केस में हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं सो डिनोमिनेटर is 25 sorry 125 and 125 can be written is 5 raised to the power 3 मान नहीं रहे हो 16/125 is a terminating decimal. इसी टाइप से हम इससे रिलेटेड विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब हम हर टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं जिस टाइप से मैंने ये किए हैं और उससे बिफोर में जब मैंने आपको ये पढ़ाया भी था विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ टू फाइंड टर्मिनेटिंग डेसिमल देन उस केस में तो लेट्स so it is sufficient. If you like the video so please like share and subscribe the channel and press bell icon button for more updates. Thank you and bye bye.